व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ अश्विनी और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि म्यूज़िक पी में प्लेबैक स्पीड कैसे चेंज करते हैं। तो पहले एक प्रीव्यू देख लेते हैं नॉर्मल स्पीड में। studios in the future, and it also kind of like अब मैं इक्वलाइजर पे क्लिक करूँगा, ये 3 लाइन्स जो हैं। अब मैं क्लिक करूँगा टेम्पो कंट्रोल पे और मैं टिक करूँगा ये चेक बॉक्स प्ले स्पीड और 50। लेट्स सी। design studios in general and start to kind of look at the other studios that existed outside of my market, like in LA, and like it gave me. तो प्लेबैक स्पीड आई गेस इंक्रीज हुई है। लेट्स सी और कितना इंक्रीज करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर पर आई गेस 100 पे इसका मतलब है शायद 2x। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। Of something to aspire to, and I actually found that I identified with motion design more because what I didn't like about sort of the 3D film productions was that आपको रिवर्स करना है फिर से नॉर्मल स्पीड में, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए और it's very sort of अब प्ले करेंगे तो नॉर्मल स्पीड में प्ले होगा। niche base, which understandably so, but you only do. So that's it guys, thank you for watching and I'll see you in my next video. Like this video, subscribe to my channel, comment down below and share this video with your friends.